So, Khushi, we'll start with great questions. like we were blind and we were like old department वो हमारे से शुरू थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता like apart from this कैसा था रिएक्शन कि जब you met your team at that time? मतलब हमें पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है एज अ थर्ड पर्सन हमें देखना पड़ता है Okay, so hi, my name is Darshita Devani and I'm HR manager at Multi Icon. Welcome to the podcast with AI interns. So today we have one of the intern department who doesn't need intro because she already introduced herself in each and every part of the corner of the company as most extrovert person in the AI department, Khushi with us. So hi Khushi. hello ma'am. Yes. So myself Khushi Shukla and I am working in AI department as an AI intern since 4 months in Multi Icon. So Khushi, we'll start with great questions, some rapid fire games as well. A lot more to know about your journey as well. Sure ma'am. Right? So just let me know कि कैसे रही आपकी पूरी की पूरी 4 months की या 90 days जो internship period था उसकी जर्नी. मैम टॉकिंग अबाउट द जर्नी ये जगह है ना एक एहसास ही अलग देती है व्हेन वी फर्स्ट टाइम केम इन द कैंप दिस प्लेस इट गेव अस अ वाइब दैट इट वाज वेरी फ्रेंडली वाइब अपार्ट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लाइफ हमें इधर रिलैक्सेशन भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है Okay. आई गेस दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन राजकोट वेयर आई हैव सीन दैट दिस टाइप ऑफ कैफेटेरिया टाइप वेयर वी कैन रिलैक्स वी Okay. कैन प्ले गेम्स और वी कैन हैव फन जिससे रिलैक्सेशन होता है जिससे काम अच्छे से प्रोडक्टिव निकलता है Okay. अपार्ट फ्रॉम गिविंग योर टाइम Okay. So as you know that we have started AI department with launch of 7 interns, right? Yes. Which we have selected from the hackathon. यस So for which exit role you have come over here and आपकी जर्नी में कौन सी जगह पे आपने AI यूटिलाइज करके ये पूरी जर्नी 90 days स्पेंड करी यहाँ पे? So basically, I was selected for the image generation for flyers and filmmaking. So I have implemented AI for generating the flyers for the company. There were 13 categories where the company can generate their flyers using the AI. So Okay, most of I think in the UI UX side, yes, right? yes, ma'am. Okay, so your expertise, I think you have performed in the hackathon for the part of UI UX Yes, and R&D, yes, right? yes. Okay, so that's great. So what was your experience to work in that category? Yes, मैम वर्किंग इन दैट मतलब हमें पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है एज अ थर्ड पर्सन हमें देखना पड़ता है कि हाउ आर द फ्लायर्स एंड हाउ दे कैन Okay. कनेक्ट द कंपनी Okay. टाइप ऑफ As you know, कि तुम्हारे साथ डिपार्टमेंट में और 6 लोग हैं, यस मैम right? So can you brief me about them कि सबसे पहले because it was Yes, totally ma'am. blind कि Yes, कौन ma'am. कौन आने वाला है वो नहीं पता था, Yes, ma'am. वो based on the selection था, right? So कैसा था रिएक्शन कि जब you met your team at the time? Yes, ma'am. So, ma'am, being an extrovert and being the alone girl in the department, I was Okay. very much friendly with I think you are only one girl in the department, Yes, right? yes, ma'am. Yes, ma'am. Please continue. So, I knew every Atmian. So, they were like my juniors. 2 of them are juniors and 1 is my colleague only in IT. So, I know their nature कि अच्छे थे मतलब दर्शन वाले I think they are very much practically sound and they are good at technical skills. Okay. And even our Atmians are like very good by friendly nature and they are like very connecting persons. Okay. And I guess we are very good at communication and everything. Okay. So it was great to meet all of them. Great. So next important Khushi, as a HR, I have noticed that कि AI डिपार्टमेंट में काफी रोस्टिंग और वो सब चलता रहता है, right? Yes, ma'am. और मेजोरिटी ऑफ टाइम यू आर द पर्सन हु आर रोस्टिंग एवरीवन एज वेल एज सब मिलकर तुम्हें भी रोस्ट करते हैं. हाँ, सो क्या ऐसी मूवमेंट थी जो सबसे बेस्ट थी और क्या ऐसे वर्ड्स थे जिसके नाम से तुम्हें लोग रोस्ट करते हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले Yes. स्पेशली? पहले तो रोस्टिंग होता है कि पैसा 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 एक चीज मैं एक बार मतलब एक हमारा फंक्शन था दिवाली का मैं BMW लेके आई बस बात खत्म उस दिन से ये BMW वाले चलो पार्टी दो भाई इतने पैसे वाले हो ये है वो है ऐसा करके Okay. एंड आई यूज्ड टू इवन रोस्ट देम उनकी सबकी Okay. अलग अलग स्किल्स होती है जैसे वो बहुत होशियारी माता है जैसे वो लंबू है मैं तो वो लंबू शांति रख फिर उसको वो चश्मी शांति रख ऐसा करके Okay. So how did you work in the real project? I think कहीं ना कहीं अपने कॉलेजेस में प्रोजेक्ट करे होते हैं, Yes, right? ma'am. But when it comes to the real projections things, Yes, ma'am. so which is something different. Yes, ma'am. So ये आपके लिए चैलेंज था कि कैसे आपने इसमें काम करा? Yes, ma'am. मैम पहले तो एक है ना जो भी प्रॉब्लम है उसे समझना ही पहले बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम हैकाथॉन में लेते हैं दैट इज टू डिफरेंट दैट इज ओनली कि चलो सॉल्यूशन मिला ना मिला इट्स ओके वो एक साइड की बात हो गई क्योंकि इट वाज फॉर ओनली 6 hours
बट रियल लाइफ में जो पब्लिक दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, वो हमें समझना, उनका पर्सपेक्टिव जानना, फिर करना. और इसमें आई नीड टू थैंक एवरीवन, लाइक फ्रॉम एचआर टू एचओडीज टू ऑल एचओडीज, परेश सर, भाविन सर, like every time they supported us, guided us, because हम अभी एक स्टेज पे ऐसे है कि we are just freshers. Yes. So उन लोग ने इतना अच्छा गाइडेंस दिया है कि every moment पे हम लोग कहीं भी अटक रहे थे, so they were always there Okay. with us. In your internship journey, that you feel that one mistake you have done the most. Yes, we can tell that थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता, like apart from this 3.5 hours, अगर मैंने 6 घंटे दिए होते तो I would learn more, I guess. Okay. So Khushi, we'll start one rapid fire, Yes, which ma'am. can be funny, and you have to answer in this or that. Okay. So camera off with the confidence or camera on with the comfort? Off with confidence. Off with confidence. Okay. Deadline tomorrow or meeting right now? Meeting right now. Okay. Tea overdose or coffee addiction? Tea. Okay. Group project chaos or solo project stress? Solo projects. Okay. Internship stipend or company snacks forever? Company snacks forever. Okay. Error at 99% of completion or starting from the scratch? Error from 99. Okay. Mentor watching your screen or code reviewing your mail? Code reviewing your mail. Okay. Google everything or ask teammate for the help? Teammate for the help. Okay. AI explaining itself or you explaining AI in reverse? Explaining, yeah. Okay. Or you explaining the AI to relatives? No, not true. Okay. Promotion in future or long weekend, like week offs for Long week trips? Okay. Trips. Talking in the meetings or typing chat while the meetings? Talking in the meetings. Okay, that's very good. You have done the, you have given the great answers, and we are ending up this podcast by one last question. That what would you like to give one advice if some new interns are coming at Multi Icon? So I would like to tell that AI is making your work easier, but it cannot beat the human intelligence. So work on your human intelligence and never ever AI give you more than human need. Okay, so thank you so much, Khushi. I hope you enjoy the podcast session with me. Thank you, ma'am.